कितना सारा पढ़ना है यार। चैप्टर 2 में देखो क्या क्या है। लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है, इक्वेटर क्या होता है, पता है इक्वेटर क्या होता है? बताओ। एन इमेजिनरी लाइन midway between the North Pole and the South Pole. This line is called, this line is a circle and we call it equator, as it divides the earth into two equal parts of hemisphere. तो मेन चीज़ें जो अर्थ सरफेस पर पढ़ना होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर। फिर पैरेलल्स है, मेरिडियन है। तो पैरेलल्स किसको बोलते हैं? सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड आर पैरेलल टू द इक्वेटर। जो इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल्स। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द half of this circle between the north and south pole is called the meridian. The parallels and the meridians can be used to define the location and the direction of any place on the globe or on the map. Parallels and meridians intersect each other at right angles 90 degree. पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स हैं। The parallels or the lines of latitude have the following characteristics. All parallels are complete circles except 90 degree north and 90 degree south, which are point. तो आप देख सकते हो पैरेलल्स बने हुए हैं यहाँ पे। These are the parallels and this is the meridian। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है? मेरिडियन है। तो ये पैरेलल्स और मेरिडियन से ही हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, ये जो आप पैरेलल्स देख रहे हो, इसमें इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे देखिए है ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ पोल की साइड में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ पोल के डायरेक्शन में है। तीसरा है आर्कटिक सर्कल। थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ बन रहा है? ये तो आपका अंटार्कटिक सर्कल है साउथ पोल की तरफ, और ये आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल की तरफ। दिस इज द आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास आर्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? साउथ पोल के पास। इक्वेटर पे 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ। हीट जोन, टॉरिड जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो टॉरिड जोन हो गया। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है वो, ये कौन सा जोन है? टॉरिड। टेम्परेचर जोन, मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। फिर आता है ग्रीनविच। Some countries mutually agreed to fix Greenwich, a place few kilometer east of London in UK. पता है ग्रीनविच कहाँ है? A place few kilometer east of London in UK. Greenwich was taken as prime meridian. The meridian or the lines of longitude have the following characteristics.
Locating places on the globe, longitude and time, local time. The time determined according to the longitude of a place is called the local time of that place. बहुत पढ़ना है, जम के पढ़ो. Greenwich Mean Time, GMT. GMT का फुल फॉर Greenwich Mean Time. Standard Time. The standard meridian of India is 82.5 degree east, which passes through Allahabad. The difference of time between GMT and the 82.5 degree east is 5 hours and 30 minutes. And the Indian standard, as the standard meridian of India is towards the east of the prime meridian. The standard time of India is 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT. This is called Indian Standard Time, IST. फिर टाइम जोन पढ़ना पड़ेगा. Some countries in world such as Russia, Canada, USA and Australia have a large longitudinal extent. The earth is like a sphere. It is slightly bulging at the equator and flattened at the poles. Angular distance of a place north or south of the equator is called latitude. Imaginary lines running from east to west which are parallel to the equator are called parallels. Angular distance of a place east or west of the prime meridian is called longitude. बहुत पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़िए. The world was divided into 24 time zones in 1884. The total number of parallels at an intervals of 5 degrees are 36. In which hemisphere is the Antarctic Circle located southern? Prime meridian passes through which country? UK. Total number of meridians at an angle of 5 degrees are 72. The standard meridian of India has been chosen at 82.30 east. बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ो. फिर है मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, डेली मोशन है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है. जम के पढ़ो यार, इसको बार बार रिवाइज करो, पेज पलटो. Speed of the rotation of the earth at the equator is about 1675 km per hour. Dawn क्या होता है? We normally notice such light before the actual sunrise. हाँ, actual before sunrise जो होता है वो dawn होता है. बोलो बोलो, समझ गए? Dusk का twilight क्या होता है? At this position it is not completely dark, but there is some diffuse light. This diffuse light क्या होता है? Dusk light. At this position it is not completely dark, but there is some diffuse light. This diffuse light after sunset is called dusk or twilight. समझ गए? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ किस लिए होता है? Peri means near and Helios means sun. When the distance between the earth and sun is minimum, about 146 million kilometer, the earth is said to be in perihelion. समझ गए? What is perihelion? जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है वो है 146 मिलियन किलोमीटर, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन. द सन इज एट दिस पोजिशन ऑन और अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर.
when the distance between the earth and the sun is maximum about 151 million kilometer, the earth is said to be in aphelion. Ap means away from the, helios means sun. Effects of the earth revolution. The revolution of the earth around the sun causes variation in the length of day and night, in the distribution of heat over the surface of the earth, and the phenomena of seasons. Phenomena of seasons में rotation of the earth on its axis, revolution of the earth around the sun, the inclination of the earth axis, ये सब all are playing the role in the phenomena of season. फिर आपको पढ़ना है समर सोलस्टाइस 21 जून, विंटर सोलस्टाइस 22 दिसंबर, स्प्रिंग एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स 21 मार्च and 23rd September. The time of the day just before sunrise dawn. Earth rotates on its axis from west to east. The axis of the earth is inclined at an angle of 23.5 degree. फटाफट से पढ़ो यार, सब रिविजन करो फटाफट. ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है. स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. ए मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज ए होल और पार्ट of it drawn to a scale on a flat surface. A small scale map, physical map. Physical map shows the relief features present on the earth's surface like mountain, hills, plateau, plains, peaks, valleys. Political map. Thematic map shows the specific type of information such as road, railways, air routes, distribution of population, location of mining and industrial centers, etc. by the thematic maps. Measuring distances. The distance means the space between any two places. Distance can be long or short. जो हम लोग मैप पे डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको मैप डिस्टेंस बोलते हैं, और जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होता है उसको ग्राउंड डिस्टेंस बोलते हैं. तो आप इसको रेफरेंस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है स्केल में. फाइंडिंग डायरेक्शंस. तो आप देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. स्केच. आप बाउंड्रीज देख सकते हो. इंटरनेशनल को रेड कलर से शो किया है, स्टेट को ब्लू कलर से, डिस्ट्रिक्ट्स को भी ब्लू कलर से. रोड में मेटल रोड है कि अनमेटल रोड है. टाउन और विलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे. ब्रिजेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्ट्रीम्स, डैम. ये सब आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो. अगला चैप्टर देखो क्या है. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड कवर्स अबाउट 29% and water about 71% of the earth's surface. Africa is the second largest continent. Asia is the largest continent in the world. Dead Sea is the deepest and the most saline lake in the world. जो डेड सी है वो डीपेस्ट है एंड द मोस्ट सलाइन, बहुत खारा लेक इन द वर्ल्ड. Special physical features include vast deserts and the Great Rift valleys.
Nile is the most important river. Tibet is the highest plateau. The Himalayas are the highest mountain range in the world. The Dead Sea is the lowest part of the earth are found in this continent. किसमें? एशिया में. Therefore Asia is known as the continent of extremes. क्योंकि एशिया में ही हाईएस्ट माउंटेन है हिमालय का, जिसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं. उसकी हाइट है 8848 मीटर और डेड सी है लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इसलिए एशिया को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स. आगे पढ़ते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. The Great Barrier Reef is a unique feature found along the northeastern coast of Australia. It is built by corals. Antarctica. Antarctica is the 5th largest continent, also known as White Continent. कौन? अंटार्कटिका. बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे. The Antarctic Treaty, signed in 1959, permits the use of the continent only for peaceful purposes. Antarctica has a couple of mountain ranges and a vast plateau around the South Pole. It has few known resources. The continent provides great scope for the scientific study of weather. So, Antarctica is also called the continent of science. Now, Europe. Europe is the 6th largest continent. It looks like a peninsula extending westwards of the Asiatic landmass. Europe and Asia are together called Eurasia. The region has many active volcanoes such as Vesuvius and Etna. Mount Blanc is the highest peak in the Alps, while Mount Elbrus in Caucasus is the highest mountain peak in Europe. North America. North America is the 3rd largest continent. The 5 Great Lakes between Canada and USA and the St. Lawrence River together form the greatest inland waterway in the world. The coastal range are a part of the Ring of Fire, which surrounds the Pacific Ocean. South America. South America is the 4th largest continent. South America is surrounded by the Caribbean Sea in the north, the Atlantic Ocean in the east, and the Pacific Ocean in the west. In the north, the Isthmus of Panama joins it to the North America. Hydrosphere. The presence of water is a unique feature of our planet. The Earth is also called the watery planet or the blue planet. There are 4 major oceans. The decreasing order of size they are पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा साइज में, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन.
Part of the Indian Ocean, the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean which surround Antarctica are referred to as the Southern Ocean by some geographers. The Mariana, the greatest depth is at the Mariana Trench, about 11,022 meters on the eastern side of the Pacific Ocean. The Pacific Ocean covers the area larger than the combined area of all the continent. It is the largest and the deepest ocean. इसी तरीके से अटलांटिक ओशन पढ़िए, इंडियन ओशन पढ़िए, खूब जम के पढ़िए. Atmosphere, the air which surrounds the earth is called the atmosphere. Atmosphere can be divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere and exosphere. बायोस्फीयर पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए. इसी तरीके से आपका एक चैप्टर हो गया है और आपका है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 6 है. लैंडफॉर्म में क्या क्या आते हैं ये देख लीजिए आप. माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन चेन है, सेवरल पैरेलल एंड लॉन्ग नैरो रेंजेस है, माउंटेन सिस्टम्स है. Fold mountains में most of the mountain range of the world such as Himalaya, the Alps and the Rockies and the Andes are fold mountains. These mountains have been formed recently, so they are called young fold mountains. Block mountains है. Examples are the Black Forest in Germany, volcanic mountain है, plateau है. The plateau is a highland with the steep slopes and the large summit area which rises abruptly from the surrounding region. That is why plateau are called tablelands. इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू, प्लेन्स. They are also called lowlands. Plains are formed both by internal and external forces of the earth. Northern plains of India. Some of the important plains in the world are the prairies in USA, West Siberian plain in the Eurasia, Gangetic plain in India, Wang He plain in China, Po Valley in Italy, and Pampas in Argentina. आगे है इंडिया लोकेशन एंड पॉलिटिकल डिवीजन. Kanyakumari is the southernmost tip of the mainland of India. India is the only country in the world after which an ocean has been named, that is the Indian Ocean. The southern part of the India is a peninsula. It divides the northern part of the Indian Ocean into the Arabian Sea and the western and the Bay of Bengal on the eastern side. Political division. India is a union of 28 states and 8 union territories. बहुत पढ़ना पड़ेगा. India physical feature है Northern Mountain, Pamir Knot. Due to its great height, it is known as the roof of the world. Karakoram Mountain lies between the Pamir Knot and the Indus River in Jammu and Kashmir. Mount Godwin Austen or K2. Height is 8,600 meters, the highest peak in the India and the second highest in the world.
is in the Karakoram mountain. इसी तरीके से हिमाद्री पढ़िए, हिमाचल पढ़िए, शिवालिक पढ़िए, नॉर्दर्न प्लेन पढ़िए. नॉर्दर्न प्लेन occupy the greater part of northern India. It lies towards the south of the northern mountain. It is also known as the Ganga Brahmaputra plain. राजस्थान प्लेन है, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र वैली, पेनिनसुला प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू. गोदावरी is the longest river of the peninsular India. Western coastal plain, the northern part of the Konkan coast. Southern part is called the Malabar coast. इंडिया है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़िए. लोकेशन, साइकिल ऑफ सीजन, कोल्ड वेदर सीजन. समझ रहे हैं, सब पढ़ना पड़ेगा यार. इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट वेजिटेशन, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. माउंटेन वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट,